Now, when you go to friends and families and weddings, how does the numbers work? मेरा number बता दो, मेरे planets बता दो. So the whole thing about numerology or any of these sciences that they were born was they were meant to empower us. So when we're saying that numbers को हमने planets में convert किया था, and planets become a part, the fundamental of astronomy, and the whole intent of a numerologist was how fast can I harmonize these planets so that the life becomes more predictable. Secondly, of course, if there were remedies to come out of that. There are two things which I've actually spent my time with was Sheldon and Pythagoras. The third aspect of what I picked up was spiritual numerology. Spiritual numerology was mostly about decoding the mantras and things like that, and why this mantra has an effect. And these mantras were then translated into numbers and planets and then effect. आपको ये बात समझाई ही नहीं गई आपके स्कूल में या कॉलेज में करिकुलम्स में that you are indeed a special civilization, you are indeed the repository of knowledge. And अगर आपको ये चीज़ बताई नहीं गई, अगर आपको चीज़ आपकी किताबों में लिखी नहीं गई, तो आपके डीएनए में तो है ही नहीं. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप. अगर आप ये तीन चीज़ों का टेस्ट पार कर जाते हो, that you are a great giver in relationships, not an expecter. आप देते हो तो यूनिवर्स आपको देता है. आप सिर्फ ये देते हो कि मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे मिले, तो वो नहीं चलता. इट्स नॉट गोना गिव यू एट अ सोल लेवल एवोल्यूशन. Welcome to the Vedida podcast, and today we have with us a very special guest, Dr. Sachin S. Sharma. He is a world-renowned neurologist, has a following of more than 21,000 clients across 51 countries, and has a doctorate in neurology. So, welcome, Dr. Sachin Sharma. Thank you very much, Iqbal Sahab. How are you? Good. How are you? It's absolutely good to be here. Looking forward. Yes. So, we'll start first with the world of neurology. Numbers and vibrations to alphabets. So, what is the core principle of numerology based on which you can say this person's life will be like this, or this person will go through these kind of difficulties, this person has these challenges or these karmic debts that you have famously prophesized in numerology, and then go about creating solutions for them? Surely. Yeah. I was just wondering while I was asked, when you were asking this question, I was just wondering how many times have I been asked this question in my life before? It's like, Yeah. okay, this is, Yeah. So I'm Sachin Sharma, I'm a father and I am a son to someone. But, when you go to friends and families and weddings, how does the numbers work? मेरा number बता दो, मेरे planets बता दो. So the whole thing about numerology or any of these sciences that they were born was they were meant to empower us. Before I go into the science of the numbers, be a little cautious about the fact that these sciences were never meant to overpower your free thinking. There was always this curiosity in the science, in the old civilizations, that भाई मेरी जिंदगी में आगे क्या आने वाला है. And this uncertainty always grows when you feel that you're not in control of your life as of today. Now, we come across these crossroads every now and then. So this came from there that, okay, मुझे पता तो चलना चाहिए कि मेरे फ्यूचर में क्या आने वाला है. And then naturally the thing became, oh, ये आने वाला है तो इसका solution क्या होगा? So numerology was also born like that. Whether it was numerology or astrology or any of these sciences which are predictive in nature, they were born like that. So now coming to the world of numbers. Numbers is like, एक तो oversimplified concepts as the way they are explained. Oh, we are surrounded by numbers everywhere. Any mathematician is going to tell you that, oh, numbers are everywhere. But does it make any sense to what am I going to be cooking in the evening, and what am I next thinking all about, and why am I afraid and fearful all the time? No, it doesn't. Even if numbers are everywhere, and they have been there historically, so whether it's in the Pythagoras system, with the father of modern mathematics, or Sheldon system, or Kabbalah system, आपने हर नंबर, हर एक लैंग्वेज, आपने एक लैंग्वेज को पकड़ा, उस लैंग्वेज के लेटर्स को you try to translate them into numbers, and then उन numbers को आपने translate किया planets में. So when we are saying that numbers को हमने planets में convert किया था, and planets become a part, the fundamental of astronomy,
बिल्कुल. Astronomy, the science of astronomy has come from the planets, and it's actually come from astrology, and it's an established fact. Astrology जननी थी modern astronomy की. Now, what is astrology? Astrology is a study of planets and their moments. बिल्कुल. उस latitude and longitude पे, उस point in time पे जहां आप पैदा हुए थे, वहां पे जब बाकी सारे planets उस point पे किस degree से आपको देख रहे थे, and as you were born and you moved along in your life and the planets kept moving on in their own orbits, ये 3D world जो थी, being represented on a 2D paper is astrology. कि इसमें आप इस घर से इतने टाइम में planets move करते रहे and your life changed. That intricate science was astrology, which is phenomenal. Numerology is the same planets but their frequencies. It's like you want to harmonize life, you need to harmonize your planets together. The frequencies mattered, the wavelengths mattered, and the whole intent of a numerologist was how fast can I harmonize these planets so that the life becomes more predictable. Secondly, of course, if there were remedies to come out of that. So numerology came from that. But fundamental was what? Planets and understanding of the nature of the planets. That hasn't changed. There's the planets will affect you the same way in astrology and numerology. That doesn't change. So ultimately, we are coming down to the planets, their magnetic force, which is exerted on you as a human, and trying to decode that through numbers. Astrology does it through its own charts, its own systems, and numerology will do it through numbers. If you're saying numerology is 20-25,000 years old, तो ये क्या संस्कृत स्क्रिप्ट पे पहले बनाई गई? उस टाइम तो there's no English. No, आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी तो है ना. हाँ, 100% है. आपकी कबाला सिस्टम भी, आपकी पाइथागोरस भी, आपकी शाल्डन सिस्टम भी, and there are Chinese systems as well. Vedic numerology is definitely is a science. It's a well-defined science. Have you also studied the Vedic numerology along with the Chaldean and the Pythagoras? In a way, yes, and in a way, no. There are two things which I've actually spent my time with was Chaldean and Pythagoras. The third aspect of what I picked up was spiritual numerology. Spiritual numerology was mostly about decoding the mantras and things like that, and why this mantra has an effect. And these mantras were then translated into numbers and planets and then effect. So whether it's an Ekunkar or other mantras, that caught my attention and my excitement some decades ago. A few decades ago, it's been 4 decades now. And then I did delve into that and found it extremely heavy, no questions about it. Maybe that was the stage of my life also, but I found it very, very heavy. And then I was trying to relate the same to the spiritual numerology part into theosophy. Theosophy is the cumulative science of cumulative science of studying of all religions. Right. So all religions being put together, being studied as what's the common factor, what is the common theme that theosophy teaches. It again seemed to boil down into numbers. Somewhere that sense of control of the planets, because each of the religion again is based on planets and its effect. That seemed to still draw its source from numerology. Because astrology, agar aap dekho, except for Indian subcontinent, most of the world doesn't follow astrology. They don't know about it. No questions about it. The fact that it's a very, very, very powerful science. But astrology is not in the Chinese subcontinent or in the African subcontinent or in the Western systems. Astrology doesn't find its place, but some form of numerology does. So it just seemed to connect that little thing about, as I dwelled into it, and I never had the time to go into the theosophy of the world and then try to relate it to the numbers. But I got a fair understanding of how the planets and their, that intuitive conversation with the planet. I got a fair understanding from spiritual numerology also, which is not an established science. In fact, somebody did that. Somebody did a phenomenal job. There was Sadash Charan Singh Ji was a gentleman where I first picked up his book, which did talk about spiritual numerology pretty potently. Well, I had that book and I had studied it for a while, and then suddenly I realized that it's no more to be found in any publication house. That's a little, I don't know why that happened and how that happened, but when I went back looking for it, I had the book with me, but the other episodes of the book were not to be found, even the original books not to be found.
So he was, I think, the pioneer in understanding the world of spirits and the world of mantras through numbers. So in that sense, अगर आप बोलो कि मंत्र सिद्धि करना है तो मंत्र सिद्धि भी न्यूमरोलॉजी है. उसको इतनी बार बोलना है मंत्र को और उसको एक तरीके से बोलना है, तो वो मंत्र भी तो न्यूमरोलॉजी है, बिकॉज उसकी भी तो संख्या है. और वो जब अभिमंत्रित कर रहे हो, विच मीन्स यू आर सेंडिंग दोज फ्रीक्वेंसीज आउट टू द यूनिवर्स. तो दैट इज ऑल्सो, एंड किस स्टेट में कर रहे हो आप, किस एनवायरमेंट इकोसिस्टम बना के कर रहे हो. जो मंत्र सिद्ध कर रहा है उसको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ताकि दैट बॉडी इज ऑल्सो रेडी टू कम्युनिकेट टू द गॉड्स. दैट बिकेम, यू नो, उन सब का बेसिस था नंबर्स था. तो अगर आप उसको छोड़ते हो और ऊपर आके बोलते हो यार ये बता दो मेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बता दो मैं बिजनेस करूंगा कि नौकरी करूंगा, ये बता दो मैं आर्किटेक्ट करने जा रहा हूं, विल आई बी अ सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, will I be doing a job in my architect world or should I be doing a business of my own? That is so empowering without having to fall into the ironclad definitions कि नहीं तुम नौकरी नहीं कर सकते, तुम्हें तो बिजनेस ही करना है. नो, वहाँ पे मैं आपको just talk to you about the concept of free will. But वो information इतनी empowering होती है. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ which I now beginning to feel now really very stressful about. हमारी जो generations आ रही हैं, Yes. now let's talk, you and I, we have seen a lot of what. We have seen the Kargil wars, we have seen the 71-72 wars, we have had blackouts in the house. Right. We have seen those kind of lives which the generation can't even imagine. Right. But they were still protected. It was not that bad. Correct. It was always good to have no internet or no cell phone in your hand and walk around. Till the time you entered your career, there was no cell phones. I mean, honestly, college में तो कोई cell phone होता ही नहीं था. So we didn't know what a cell phone is. Now we came from that generation and we built up the country. Now had the internet been there, had been more facilities, this country would have become something else faster. Yeah. So it was inherent in, ये तो समझ आ गया कि country का जो potency है, that's not coming from the technology part of it, it's coming from the strength of its civilization. Yes. Now that conversation got lost in translation because आपको ये बात समझाई ही नहीं गई आपके स्कूल में या कॉलेज में करिकुलम्स में that you are indeed a special civilization, you are Correct. indeed the repository of knowledge. And अगर आपको ये चीज़ बताई नहीं गई, अगर आपको चीज़ आपकी किताबों में लिखी नहीं गई, तो आपके डीएनए में तो है ही नहीं. Correct. And then you run into a danger of completely cutting yourself off from such a big blessings. Absolutely. अब आप 140 करोड़ लोग हो, which is the highest population in the world, और हमारे पास ही सब एडवांटेज था कि because these guys are young, the 35%, no, the 65% of the country is less than 35 years old. Yes, of the population. So which means there is this huge inherent, potency, and yet we've cut ourselves from what could have fed into that potency. Right. Was our own knowledge. Right. So in my little quest, when I say that, I want to make millions for billions. We have a program called Millions of Billions. I have a program called The Agrani Man, and I'm going to be in Bangalore now on the 20th doing a Money Magnet again. When I do these programs, I want to reach out to the young or the population who's going to actually make the country. And there the planets come again. Right. So mera conversation, let's say, is to say, how much of these sciences can I now practically use to empower my country, empower the society. तो उसमें 4-5 चीजें तो आती है, उसमें आपके कर्म के दोष तो आते ही आते हैं. बिकॉज वो एक रीजन था, मैं और आप पैदा हुए थे टू पे ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मा या इनकम्प्लीट जो रह गया था. वरना मेरे और आपकी लाइन में बारी ही नहीं आती ह्यूमन लाइफ में. तो 95% of us have a karmic debt, and that's not a unique thing. Now just to be able to understand that and the impact of that if you have a karmic debt 13, 16, 14 and 19, आपके इस लाइफ के प्लैनेट्स तो काम ही नहीं करेंगे. That's To where, what extent? I'll tell you, that's where astrology fails. No, the astrology doesn't fail, the astrologers fail. So when you go to normal astrology, how many times have you heard कि मैं तो बहुत टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने कहा आपके तो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, लाइफ तो बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन मेरा तो कुछ ठीक हुआ ही नहीं. Right. It fails to that extent. Actually, when the person faces that situation, only then he goes to these occult sciences. चाहे वो हाँ, but इसमें दो चीजें थी, पता है. It's a very fine thin line. This is, see, where are we getting now?
आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, यू हैड द फेथ कि भैया द डॉक्टर इज नॉट गोना ट्रीट मी देयर, आई एम गोइंग टू स्टक विद दिस सिचुएशन, मेरा तो कोर्ट केस आ गया, कहीं जेल ना हो जाए, कहीं डाइवोर्स ना हो जाए, कहीं पे इतना एक्सीडेंट हो गया, मैं कभी उठ पाऊंगा, चल पाऊंगा, देयर हजार क्वेश्चंस व्हेन यू कम इन, यू आर टॉकिंग अबाउट बिग क्रॉस रोड्स ऑफ लाइफ, देन यू सीक हेल्प विच इज बियॉन्ड योर लॉजिक। तो आपके ट्यून्ड ऑन हो बिकॉज आप उस कंट्री को बिलोंग करते हो जहां पे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर आर अवेलेबल। Right. And yet, astrology has failed in the eyes of the consumer. Right. Because उसके कर्म के दोष के बारे में बात नहीं हुई, उसके कर्म के दोष को कुछ ठीक करा नहीं गया, and the planets were not allowed to work, and he forms an opinion. All this is nonsense. This doesn't work. ये तो gemstones बेचने का या पूजा बेचने का एक नजरिया है, तरीका है. All of that, whatever you label it as. At the end of the day, ये पूजा बेचने का, जेमस्टोन्स बेचने का तरीका नहीं है. पूजा भी तो 20,000 साल पुरानी, इससे ज़्यादा ही है. 10,000 साल का तो इंडियन डॉक्यूमेंटेड सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन. जेमस्टोन्स एज अ साइंस, इट्स अ सेपरेट साइंस. Astrology as a science is a separate science. So if you are combining it, yes, if it becomes a financial thing, then it becomes an issue. Now, but in the mind of the consumer, तो काम नहीं किया. But what did the universe tell you? Universe said, मैंने आपको 84 लाख non-human lives के बाद एक human life दिया है. Right. जाओ बड़ा काम करो. Right. उसमें आपको 4 चीजें पहले पार करनी पड़ेंगी. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप. अगर आप ये 3 चीजों का टेस्ट पार कर जाते हो, दैट यू आर अ ग्रेट गिवर इन रिलेशनशिप्स, नॉट एन एक्सपेक्टर. आप देते हो तो यूनिवर्स आपको देता है. आप सिर्फ ये देते हो कि मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे मिले, तो वो नहीं चलता. इट्स नॉट गोना गिव यू एट अ सोल लेवल एवोल्यूशन. बीच में टेक्निकली एक आध बारी जीत जाओगे, आप 4 रुपए बना भी लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं जीतोगे. दैट्स वेयर 90% ह्यूमैनिटी फेल्स. सेकेंड इज हेल्थ. Established by WHO. हेल्थ क्या कहती है यार? 70% हेल्थ प्रॉब्लम तो माइंड से आती है, 30% स्टमक से आती है. तो मेरे को तो अपने माइंड और स्टमक को तो देखना था. स्टमक तो फिर भी आदमी समझ सकता है, एंड स्टमक में एक्चुअली बाय द वे हनुमान चालीसा भी चलती है. Right. वो भी स्टमक एरिया पे आती है. एंड देयर मेनी अदर थिंग्स, देयर प्लैनेट्स आल्सो देयर, देयर जेमस्टोन्स आल्सो लाइक अ जेड और एन एमरल्ड जिसमें फॉस्फेट्स होते हैं. सो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्टमक. एंड ऑफ कोर्स अ गुड जिमिंग रूटीन और अ गुड एक्सरसाइज रूटीन कैन टेक केयर ऑफ द स्टमक वेरी इजीली. बट माइंड तो नहीं लगता. Right. Mind is 70% health issues. For whatever reason, चाहे आपको वो इकोसिस्टम था, चाहे आपकी जिस तरह से आपको बड़ा किया गया, चाहे आपको इंस्टाग्राम में फीड कर दिया जाता है आज की तारीख में, चाहे यूट्यूब में आपको फीड कर दिया जाता है, आपके माइंड को क्लटर कर दिया गया. यू नॉट दैट. एक हमारे टाइम में बिकॉज देयर वाज सिंप्लिसिटी, सो वी कुड पुट अप ब्लिंकर्स ऑन के भैया मुझे तो इंजीनियर बनना है, एंड दैट्स इट. And I'm putting my light, and all the IAS officers came from Bihar. Let me just like catch you for a minute there when you talk about cluttering of mind, because I think that is something that we really should expand on I was going and to do that. impress upon the younger generation, because the Western society or the billionaires or the people with all the money, they are only concerned with cluttering your mind. So you don't create the thought to go beyond what they want you to do. So I'm going to so this is a pretty good path to take when you talk about billionaires, because I was going to come into the billionaire part maybe another 10 minutes later, because I was wanting the young guy on the street to relate to our conversation कि यार mind cluttering होता क्या है. हाँ, please. जब मैं आपको ना एक बेसिक लेवल पे mind cluttering की बात कर रहा था, that my influencer is telling me देश में तो सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, and there is this guy, same generation, same age group, who's going now and taking a video of Cochin shipyards where ships are being built in India. He is going to the places where coaches are being built, and he's taking a video of that. He is going to places all across, and he's become such a famous YouTuber. He is going to the places where the country's future is being built. Right. He says कि ये देश है हमारा, वो नहीं है जो आप बोल रहे हो. हाँ. Now that's cluttering and decluttering at a level where you are, decluttering the future generation. बट आप अपने इकोसिस्टम को घर में देखो. आप, मैंने आपको कहा कि आपको आपकी जिंदगी का मकसद पाने के लिए
चैलेंजेस पार करने पड़ते हैं। सेकंड जो हेल्थ का चैलेंज है, राइट। जब आप किसी से ग्रीड में फंसे रहोगे, ईर्ष्या में फंसे रहोगे, इनसिक्योरिटी में फंसे रहोगे, रिवेंज में फंसे रहोगे, पेसिमिज्म में फंसे रहोगे, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कितने साल सुना था हमने ये इन अवर ग्रोइंग ईयर्स, अरे यहाँ तो ऐसे ही है, कुछ नहीं हो सकता। एंड देन सडनली इट इज ऑल हैपेंड। व्हेन यू आर विद अ लेगेसी के गोरा है सामने या ये है वो है, आपको तो झुकना ही है। तो हमारे माँ बाप तो झुकते थे, ग्रैंड पेरेंट्स तो झुकते थे, हम कम झुकते थे, आज वाली पीढ़ी तो झुकती नहीं। वो झुकने के सिवा जो उनको चाहिए स्ट्रेंथ खड़ा होने के लिए वो नहीं मिल रहा। दैट्स द डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। माइंड को ठीक करने के लिए सबसे लाइक WHO सेज ना 70% प्रॉब्लम तो हेल्थ की माइंड से आ रही है। Okay, so quickly connecting, what numbers give us a strong mind? बिफोर आई डू दैट, बिकॉज दैट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट वी कैन एंड विद। पहले मेरे को ना आपके बिलियनियर्स पे आना है, क्योंकि आपका बिलियनियर्स वाला कॉन्वर्सेशन इज व्हाट एक्साइट्स मी, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट द मैक्सिमम बिलियनियर्स आउट ऑफ इंडिया। तो मैं वहीं पे पहुंच रहा था कि इस जनरेशन को मुझे क्या करना है कि इसका माइंड को मैं डी क्लटर कर सकूं। सो थिंग्स लाइक दिस मनी मैग्नेट प्रोग्राम दैट आई डू, आई वर्क, फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसका, टू वर्क एट द सेलुलर लेवल ऑफ द माइंड। Right. That's the first chapter. Okay. The second chapter is to work at the karmic debts Absolutely. and karma's level. Yeah. The third chapter of this conversation is the soul level की journey. या मेरे को soul को कैसे protect करके चलना है, because next life में भी तो मैं born होऊंगा या होंगी। ये third chapter होता है। The fourth chapter of the program is what? कि यार मेरे को relationship मेरा पैसे से कैसा होना चाहिए, so that I'm not fearful. अगर मुझे पता है कि मेरे माँ बाप है तो मेरी security तो है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, कोई बात नहीं है माँ बाप है, तो व्हाई कांट आई हैव द सेम रिलेशनशिप अबाउट मनी, कि कोई बात नहीं पैसा तो है। वहीं पे प्रॉब्लम आती है, बिकॉज लक्ष्मी जी आपका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज टैक्टिकल स्टफ के हाउ टू गेन मनी, चाहे वो मंत्र हो या जो मर्जी हो, which I teach. When I make a program like that, what am I doing? I'm just creating a cheat sheet for the youngsters. कि भाई तेरा attention span बड़ा कम है, you're an Instagrammable generation. Your attention span is very less. Here is 4 hours of conversation. Isko to like a machine repeat, and repeat, which is like mantra siddhi. And you breakthroughs are achieved. Time tested as obviously I'm teaching now. Now comes the billionaire wala part. Billionaires don't think like that. Billionaires already understand the word leverage. उनके लिए ना सब कुछ leverage है। उसके लिए अगर मेरा वो एक्सपेंसिव घड़ी है तो भी लेवरेज है, उसके लिए अच्छी गाड़ी है तो दिखाने के लिए नहीं है, वो लेवरेज है। उसके लिए उसका पहनना चलना वो सब लेवरेज है। जिस टाइम आप वर्ड लेवरेज समझते हो कि मैं 100 रुपए को 20,000 रुपए कैसे दिखाऊंगा, लेवरेज कैसे करूंगा, दैट्स व्हाट दे डू, दे आर लेवरेजिंग पीपल। नाउ बिटवीन द वे यू लेवरेज लाइफ, which means you leverage every hour of your wake up time into producing something of like ठीक है यार, you are living your life by the day and then you can't live your life by the day because you'll have to live your life by the hour. आपको क्या पता शाम को 4 बजे क्या होने वाला है? We think we know, we have an appointment, but who knows? But at least I know this conversation that you and I are having for this hour is what is in control. So to be able to break down our lives into these hours and days and then try and leverage these hours, that requires a uncluttered mind. Correct. Now, from a billionaire's perspective, they unclutter their mind not by getting involved in many things and all. They are involved in too many things. Make no mistake about it. They're running businesses and they're taking decisions by the hour which impact money, which impact futures of humans. So they are not sitting relaxed for sure. They have no time to see a Netflix movie or things like that, which we take it for granted कि यार शाम को तो ये वाला सीरियल अभी खत्म नहीं हुआ तो देखना ही है। उनकी लाइफ में वो नहीं है। चलो, सो वहां से एक डिक्लटर हो जाता है कि वो सोशल मीडिया से अलग रहते हैं और वो इन सब चीजों से अलग रहते हैं। सो दे फाइंड देयर हैप्पीनेस परहैप्स maybe in a religious place they go to, maybe in a party they may throw, which is once a year, preparing for it. They will find their happiness in the preparation, not the execution. Execution with the guy is going to stand pretty and say, oh, I collected all these people, these are my network, and I spent my 25, 30, 40, 50 lakhs, a crore in this party, 2 crores. He just sits there and signs off as a satisfying event. Right. His excitement is going to be building up to that event.
Who's gonna come? Who's gonna be there? What you gonna be wearing? What's the sequence of the conversation? So they will build it up like that, and that's their, कहते हैं ना, decongestion or release of stress. But their biggest asset is they declutter their physical environment. This whole concept of contemporary architect interiors, minimalism, comes from there. एक टाइम था जब राजा महाराजा ऑस्टेंटेशियस लाइफ जीते थे, दी अबू जानी टाइप ऑफ लाइफ, Right. यू नो. Right. आज का जमाना ये है कि सिंप्लिसिटी वाले घर होते हैं. द कार्स, इट्स ऑल वाइट एंड सिल्वर, इट्स मिनिमलिस्टिक. You make a lot of effort to find a neighborhood which is very quiet, and the neighbors have no chance to peep into your house. You'll grow trees and you'll grow boundaries and things like that, because वो ज़माना चला गया कि बहुत बड़े बड़े listed आसानी से मिल जाते थे, while you still need to be around your office. So whatever they try to create, they try to insulate themselves. They are not the guys who are going to party every night. Those are millionaires. They want to be billionaires. They're trying to reach somewhere else. They're still on leveraging of money from the banks and all of that. They're doing stuff which is on an EMI. They're doing stuff which is still trying to put it together. The millionaire class. So they are okay with the parties every night. They need to be seen around. They need to be hedging. But a billionaire, old money तो चलिए छोड़िए, जो billionaire है आज की तारीख में, the tech guys and all, they don't want to be seen. They don't want to be thinking too much about what they're going to be wearing. It's all designed. The houses are clean and neat. अब वो इतना मेहनत करते हैं अपने माइंड को डीक्लटर करने के लिए, लेकिन हम तो जाके हर सेल में खड़े हो जाते हैं. एक फ्रेंडशिप बैंड नहीं होगा, वो उतने सारे पड़े होंगे, पिछले 10 साल से पड़े होंगे, गैदरिंग एनर्जी एंड गैदरिंग डस्ट. एक ड्रॉर खोलोगे तो ड्रॉर भरा हुआ होता है. एवरीवेयर योर माइंड इज सीइंग क्लटर. हाउ विल यू फाइंड पीस? इफ यू जस्ट picked up that drawer and emptied it into a dustbin, you won't lose anything, but you'll gain that decluttering of mind. So अब सारा गेम तो decluttering का आ गया. Leveraging उससे पहले आता है. उससे पहले trying to maximize your daily basis में एक एक घंटा यहाँ पे planets आते हैं जो कुछ help कर जाते हैं, कुछ planets नहीं help करते. So when you are looking at the planets as a numerologist, you know यार ये वाला planet है 5 नंबर है, तो ये तो बहुत restless है, इसको तो पहले माइंड को सेटल करना पड़ेगा मुझे. 3 नंबर वाले में जो पीपल हु आर बोर्न विद नंबर 3 एंड ऑल, इसमें तो गैस आएगी स्टमक में, ये गैस स्टमक में हिट करेगी हेड को, और इज गोना गिव यू हेडेक्स, माइग्रेन्स. 2 नंबर तो मूड स्विंग वाला इंसान है, कभी मूड ऐसे जाएगा, इसका माइंड तो कंट्रोल होता ही नहीं. 1 नंबर इज ऑल अबाउट decluttering and going after what you want, but at the expense of relationships. अभी मैंने सिर्फ आपको वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स में रिलेशनशिप्स की बात ही नहीं करी, बट अभी तो हेल्थ में. नाउ व्हेन इट कम्स टू नंबर 4, दे आर स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड, परहैप्स द बेस्ट दे कैन मेक, यू नो, ऑफ ऑल द प्लैनेट्स मे बी दे हैव अ गुड चांस, बट ये किसी की सुनते नहीं है. सो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग तो जब सुनते नहीं है तो अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाती है इनसे. बिकॉज no person on earth is competent enough to have it all. You need information, you need friends, you need some advice. You can always say कि हाँ ये एडवाइस सही है या गलत है, बट एडवाइस मिले तो सही पहले. अब आप एडवाइस लोगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? 6 नंबर इज ऑल अबाउट, ओके, they will take it, they'll absorb it, they're very nice, but they will clutter their mind with hypertension. सोचते ही रहते हैं, चिंता ही करते रहते हैं. It's only the 7 number which is an intellect, which will go through, which will research, which will look at all the structures and put it all together. But they don't have the leverage of gaining manpower and relationship expertise. So they'll end up doing it all themselves, which is not going to work in the long run. फिर शनि के, फिर तो कलयुग के देवता है कौन? जो मनी पावर पोजिशन देते हैं वो कौन है? वो तो 8 नंबर है. 8 is one person. 17 and 26 थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, which I talk about in my other reels. But एक 8 as a planet ऐसा होता है जो अपने कर्म से, of charity, और अपने धर्म से, which is your business, they can build it together, provided the problem is the 8 is कि वो कार्मिक नंबर सबसे बड़ा कार्मिक नंबर है. वो आपने जो कर्म किया था वो आपको उसका रिस्पॉन्स इसी लाइफ में दे देगा.
It's not going to wait for the next life to say आपने गलत कर्म किया था अब आप इसलिए पैदा हुए हो to pay it off. वो आपका जो ना rewards and punishment एक साथ दे देता है. So people are afraid of it. कि तो punishment will do. So if you live a life of integrity, if you live a life of charity, if you live a life of making money and helping life, then that number is very easy to balance. Number 8. And the last is, which is very difficult to manage, is number 9. Too many, all the planets come into number 9. 9 is a very, very volatile planet, but it is the only planet that gives you a breakthrough for moksha. That you don't have to be born again. वो 9 से आता है. Because you have to assimilate and get over the experiences of all the planets. What are the differences of the 9 combination, 9, 18, 27? 9 is any single digit number has its weakest potency but best health safety. 18 is all about highest levels of mental intellect. वो इंसान अपने mental intellect को ना highest use कर पाता है. 27 is a lot more emotions and hence it's a very unstable both health wise as well as mental intellect wise. But their spiritual questions are high. तो फिर उनको समझ नहीं आता कि मैं spiritualism में जा रहा हूँ कि मैं पैसे में जा रहा हूँ कि मैं दोनों में जा रहा हूँ. The only common issue with number 9 is, I still have to come to that third part where, you know, the step of challenges. Yeah, so only common factor with the number 9 is that you can't follow money for the sake of money. वो इतना spiritual number है, वो दिया जाता है. For example, if you're born on the 9th or 18th, 27th. For example, if your date month year adds to 9. For example, the vowels in your name, original name that you were born with, जो school में रखा था, बचपन में रखा था, उसके vowels 9 आ जाते हैं. Which means आपका 9 dominate करता है. So वो soul की journey होती है. 9 domination का मतलब है आप पैसे के लिए follow कर ही नहीं सकते. आपको हमेशा quality ही follow करनी पड़ेगी and that will take care of everything. But because it's such a number that आपके life में ऊंचाई आए तो भी चलेगा, गिरे तो भी चलेगा. So this emotional turmoil which you're born with an emotional turmoil, ऊपर नीचे जाता है. The whole thing about stabilizing it slowly with experience and age and being wise about it, so that the ups and downs don't really matter. It's just the quality matters. That's the lesson of a number 9, which is the toughest lesson to learn. बाकी लोग तो normal lesson लगे निकल जाएंगे. 9 वाले को बहुत कुछ सीखना पड़ता है because वो मोक्ष की तरफ जा रहा है. तो उसका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ बहुत बड़ा होता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज बड़ी होती हैं, मोक्ष की तरफ का रास्ता बड़ा होता है. टर्मोइल्स भी आते हैं बट वो टर्मोइल से फर्क नहीं पड़ता, नीचे ऊपर जाएगा तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे अंडरस्टैंड के पीछे, दे अंडरस्टैंड दैट बाय द टाइम दैट देयर इज अ बिगर पावर बिहाइंड who has created us all, and that's an irrefutable fact. Now my point was, before you even get into this conversation, I said कि health and wealth, you know, इसमें आता कि आपको 3 चीजें तो पार करनी पड़ती है. माइंड हो गया और वेल्थ का पार्ट हो गया. रिलेशनशिप्स इज योर बिगेस्ट चैलेंज. एक यू कांट डिनाई द फैक्ट कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते विदाउट द सपोर्ट ऑफ पीपल. करेक्ट. सो देन यू हैव टू बी दैट बीकन ऑफ एक्साइटमेंट टू पीपल दैट आप ना ऑन सिंगल एज अ पर्सन यू गिव लव, रिस्पेक्ट एंड केयर. गिव आता है, अच्छा है, नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आपके जो दिल कहता है कि मैं करूं, आप सिर्फ उसकी सुनो. इट्स नेवर गोइंग टू बी अ डील इफ यू वांट टू अचीव हायर थिंग्स इन लाइफ वेयर यू आर डूइंग थिंग्स सो दैट यू रिसीव समथिंग. कभी भी नहीं होगा वो रिलेशनशिप. आपका होगा भगवान के साथ हो सकता है कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को करके दो, मेरे को तो चाहिए. यू कैन बी अ चाइल्ड बट इन अ रिलेशनशिप विद ह्यूमंस it should never be, because it's your weakness, कि आप जो कर रहे हो वो उसके लिए कर रहे हो कि आपको मिले भी. That's where people fail. Anybody who is doing something for you is doing out of his planets asking him to do. Otherwise आप करोगे ही नहीं. तो अगला इंसान आपके लिए करेगा या नहीं करेगा वो तो उसके planets है. आपकी तरफ से why should it dry off to say that I'm not going to support this person, I don't really love and respect and care the people because I'm not getting enough in return. That's not going to happen because वो वाला तो आपके planets थे. Now you have given what you want to give and you are that beacon of support. You just need to be that space that people come into your vicinity, feel empowered that they have their space in this, they're not judged, but they don't have to perform as per their expectations.
मैं जाता हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा लव मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, बट आई एम ऑल्सो गिवन माई स्पेस टू बी माई नेचुरल सेल्फ. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज टू पास करो इन टूडेज लाइफ. एंड द मोर पीपल आर अबाउट ओ फ्रेंड्स बनाओ, जाके नेटवर्क बनाओ, दोस्त बनाओ, द मोर दे फॉल इनटू दिस ट्रैप. Anyone who's achieved greatness, Ratan Tata said so. He said it. I am successful because I don't have any friends. I was watching Abdul Kalam ji at Jaipur. They have this where the Lit Fest happens. Forgetting the name of this place. And he was at that time the father of nuclear science. Says I've reached only because I'm not married. He said that. You saw Modi sahab. त्यागा पहले फैमिली को, सेटल किया, छोड़ के आए, पार्लियामेंट घुसने से पहले जमीन को हाथ लगाया. नाउ आई एम रेडी फॉर वॉर. एंड इट्स बीन अ वॉर. Absolutely. एंड ही इज बीन अ योगी at war. Absolutely. People love him or hate him, doesn't really matter. He is a yogi at work. Yes. So at the end of the day, आपको कुछ त्यागना तो पड़ता है greatness के लिए. Yeah. And the more you fall into this trap of how many friends do I have, चलो यार अब कहाँ जाएं, किससे मिले, किसको बुलाएं. You can be still doing that for the rest of your life, but just feeling very happy about the fact कि यार बुलाओ यार, मुझे खुशी मिलती है. And treat them as a VIP, not because वो मेरे को बुलाएंगे. You cross that line. You've crossed the thresholds. तो जाके आपका next thresholds आते हैं जहाँ से you achieve something at your soul level, which is कर्म का दोष पूरा करना है, अपने soul group को support करना है, अपने knowledge gain करके knowledge को spread करना है. ये 3-4 चीजें होती हैं जिसके लिए हमें human life actually मिली होती है. One is to pay off karmic debts so that the soul can move on the journey. Second is to take care of a soul group. That conversation can happen at a different level. What is a soul group? Third is to achieve the path to moksha. This is the reason that you are born. And the fourth is to gain knowledge and spread knowledge. ये 4 चीजें तो होती नहीं क्योंकि आप 3 चीजें पार ही नहीं कर पाते. You can't get over pessimism from people around you. उसने ये किया, वो किया. You can't get over your greed over money, insecurity over money, fear about money. You can't get over what your mind is not uncluttered. You can't get over your health issues. आप यहाँ पहुँचते नहीं. 99% of humanity fails there. तो यहाँ कैसे पहुँचेंगे? न्यूमरोलॉजी को यहाँ पे हेल्प कर रहा, मेरे को बहुत हेल्प करते हैं. बिकॉज मैं जब चार्ट बनाता हूँ ना, लाइफ चार्ट्स बनाता हूँ किसी के, तो मुझे उसकी जिंदगी का पूरा कहानी पता होता है. And you're kind enough to mention 21,000 clients. 21,000 clients is a very long list of people that I've met in my life. Absolutely. And when you talk about 51 countries, I don't know how much of that is, really the truth and all, because it keeps coming. I mean, you added Brazil and then you added Serbia also. अब वो पता नहीं 50 है, 51 है, कितना है, but बहुत सारे हैं. मतलब definitely more than 40, 45. तो एक टाइम पे जब मेरा staff गिनता था, but it means nothing. All it means is, oh, this person comes from a very different background. ये तो ब्राजीलियन है, उसकी थॉट प्रोसेस ही दूसरा है, उसका इकोसिस्टम दूसरा है. दिस लेडी इज फ्रॉम सर्बिया, दिस गाय इज फ्रॉम पाकिस्तान. इनके थॉट प्रोसेस अलग है जो आप रिलेट नहीं करते. तो मेरे को तो डिटैच होके मेरे को तो सिर्फ नंबर्स देखने होते हैं ना फिर. सो व्हेन आई एम लुकिंग एट नंबर, दे आर सो पावरफुल. वो कोई रिलीजन हो, कोई कंट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन आई टेल देम, बिकॉज सिस्टम यही है कि भाई आप मिलने के बाद ना आधे घंटे बताओगे नहीं कुछ किस लिए आए हो, मेरे को बोलने दो पहले. Let me read the numbers. It always comes out true. It always comes out true. It's been 41 years of doing it full time, half time. Have you worked out some of your own techniques which are just specific to you as compared to following? Most of my techniques are only specific to me. I worked out 85% of what, right from the day where I draw a chart. Yes. With the color pens that I use. With the arrows that I make on those charts, everything is my own. There's nothing picked up from anywhere. So the foundation was just reading up on Chaldean, and then from there on, you went onto your own experiential path. That was my advantage. I didn't have to be a numerologist on day one. It started in class 8th. अब 8th में क्या समझ होता है? इतनी छोटी सी कीड़े की किताब थी सिर्फ.
इंटरनेट तो था ही नहीं। और वो इतनी छोटी सी कीरियो की किताब को इतना मोटा रजिस्टर था मेरे पास, आई स्टिल हैव दैट रजिस्टर, दैट एंड यू हैड जस्ट one bedroom house, you know, in Green Park, fancy address but a small house. So my study was the balcony, and in my balcony was these table and all, and these expensive daru ki khali bottles. That was my decoration of my study. You know, it's like, what else would you have at that time? And because there was only that much exposure, so whatever fancy bottles I would get and all that, and then there would be another table came and I started collecting the gramophones and this Doorbeen and all that from Sundarnagar and things like that. So I would decorate my space and put a chick down. Half of the chick would be down and this would be my space. And this karaoke kitab and this thing at 4 o'clock, 5 o'clock in the morning, and then I would go to my gym and all. It was like a journey because we were not distracted. Yes. ये सेल फोन नहीं देखना, व्हाट्सएप चेक नहीं करना, रिस्पॉन्स नहीं करना, What इंटरनेट रात pushed तक you movies towards it? What pushed you towards picking up that book? That was destiny. That's a master number. I'm 11th. As a master number, that's a different conversation. And my date plus month is 9. It's a journey to moksha. That's destiny. There was no environment to support what I was doing at that time, except for the fact that there was no TV, and then there was no internet, and there was no WhatsApp. And that's where you achieve greatness, honestly, if you're able to cut it off out of your daily life. Okay, just a quick Q&A before we flow into the conversation again. There are master numbers 11, 22. There are 33, Haan ji. 33, 55, 66, 77, 88. Not being used In regularly. the calendar month, 11 and 22 will show No, up. and And the then, master numbers can be in the name also, no? then I was just coming to that. Then after that, they'll subsequently show up in a name if you have to add, when you go to higher digits. But आपको master number बताना तो पड़ेगा लोगों को क्या बात करें. बिल्कुल. So tell us a little bit about each master number before we get to the next question. तो कोई खामियां खूबियां quickly of master numbers. See, master numbers का कोई खामे खूबियाँ होता नहीं. Master numbers का मतलब है कि you have been tasked by God to do God's work on earth. Very nice. 11 is called a spiritual messenger of God. 22 are called master builders. They build dams and they build highways and they build buildings. They're master builders. That's 22. 33 is the people who bring society level changes, transforming or transmuting the society in a permanent way. Those are 33. तो 33 को हम न्यूमरोलॉजी में लक्ष्मी जी का नंबर भी मानते हैं. So it's a very, very powerful number to have, but that's obviously mostly going to come from the name number. So you have a lot of people with that name number and that makes life very comfortable. अंजुला शर्मा का कितना है? 55, 44 है कि नहीं? कि 55? नहीं, अभी आ रहा हूँ एक मिनट. मम्मी का मेरी बीवी 33 है. Right. आराम से बैठी टीवी देख रही है. 33 is a very powerful number to have. Name number बेटे का 33 कर दे, वो आर्किटेक्ट सारा काम ठीक हो जाएगा. Coming to that, so 33 is who brings society changes. 55 is like it represents the highest or the finest power of sun, sun god. Now, sun by its own nature is speed. It's energy. So this is so transformative in terms of energizing the person that they were the old armies, Greek and Roman armies and all. They used to wear a locket of 55 before they used to go to war. They'll kill the enemy and save themselves, etc. in a split second. It gives a lot of high energy. It's a very, very potent number to give to people who are born with moon energy, which is a very slow number for material progress. Moon is 2, 11, 20, 29. Take the 11 out because that's a master number. So 2, 20, 29. And then, so 33 and 40, 55 is all of that. 66 is Jupiter. Good for social status, good for money. Basically a very happy, a very conducive environment creation ke liye. So that's more like enlightening the people from your spoken words in terms of counseling and things like that. It's more like a healing words, whereas 11 is more about spiritual teaching, more about the spirits. So 66 is a little softer word, but it's more on counseling and healing and motivating to the highest one's potential, things like that. And 77 is mostly about business, networking, retail, trading, something building up by connecting people. You could build up company, you can build up businesses, but you could also build up your own networks.
77 is like that. 88 is hardcore money. The best number for making a lot of money. Money power. So, but again, these are master numbers. These are numbers which has a spiritual sense of being. ये material numbers नहीं है सारे. इनका फंडामेंटली यही होता है कि अगर आपका बिलीफ है ऊपर वाले में किसी भी फॉर्म में, some kind of a cosmic intelligence, if you're a believer and you have to be a believer, trust me, you can't succeed. You only go that much more with your logic and data, and people then learn it the hard way. A lot of self-made corporate people that I come across, take their visiting card away from them. You know what really falls through. 2 years later, you can't even recognize their physical senses, their physical appearance. ये हाल हो जाता है. Right. So that's where कहते हैं adversity is the biggest teacher in life. जब adversity आएगी तो जिंदगी समझ आएगी कि actually क्या थी. So master numbers are about adversity is not the teacher. Adversity आएगी ही आएगी. But adversity आपको वो बताने आएगी क्योंकि आप last moment पे save कर दिए जाओगे कि मैं आपके पीछे हूँ. Now, if you have an environment like that, which is very little, few people definitely have that, जहाँ पे already spiritualism की बहुत बातें होती हैं, पूजा होती है, पाठ होती है, and बच्चे भी इसी environment में बड़े होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा आसान होता है. वहाँ पे adversity levels are very less. But where the guy grows up and says, I don't believe in God, it's gonna get hit very badly. Because आप ऊपर वाले का काम करने भेजे गए हो. अब ऊपर वाले में विश्वास ही नहीं करोगे तो पहले तो द यूनिवर्स विल से चल भाई अगले 20 साल तेरा बिजनेस भी डाउन है, तू जेल में भी बैठा है, तू यहाँ भी है, तो ये भी है. जब तू प्रे करना सीखेगा तब आके हम तेरे को यू विल अचीव ग्रेटनेस. द प्रॉब्लम विद द मास्टर नंबर्स इज एटलीस्ट इन माय वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी वेयर आई स्टडी देम एंड प्रीटी एक्सटेंसिवली सो is that I've seen 80% failure in master numbers to reach their potential. It's a very high number. Why? Because of the environment that they are a part of. Because of the social conditioning that we have. Friends banao. Because they are not connecting themselves to the divine grace. No, because they are don't have the time to connect from within as to who they are. Their entire life is filled up with either friends. Clutter, you mean? Friends, WhatsApp, Instagram, Facebook, you name it. Now Perplexity, ChatGPT, it's not getting simpler, it's getting more. If you don't have even a single hour to yourself to know who you are, how will you reach your God? It's not possible. वो हो ही नहीं सकता ना. I think this would be a very good exercise, and I would like to ask you what methodology can you just give us right now that people can help to find, to link themselves with their... Only one that I can share, because rest come into my programs. I've stitched it, and you know, hota kya, there's a reason, I'll tell you why. A lot of people will see it with a lot of skepticism. I'm fine with that. Saraswati हमेशा एक prepared mind को reach करती है. Right. And why I'm saying I'm going to say this right now. No, I like that you said that. No, it's the way it is. Everything is, whatever I'm saying is somebody else is telling me to say that. I get into a zone जिसमें बात करता हूँ, फिर zone से मैं बात करता रहता हूँ. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, simple, and it's a very simple technique to understand how do you declutter your mind. We always have a camera. एक कैमरा होता है ना यहाँ पे एक. हम अपने आप को ना कैसे लग रहे होंगे, हम जब बात करते हैं, when you're presenting ourselves, when you're in an interview, when you're even saying something with a group of friends, you always have this camera on कि मैं कैसा लग रहा हूँगा या कैसी लग रही होंगी. You close your eyes in front of the God, आंखें बंद करके आप बैठो, आपको पता होगा आप कैसे दिख रहे हो. Because the mind, your aura is, आपकी आंखें थोड़ी ना देखती हैं. यहाँ से 2 फीट ऊपर there's a चक्रा, ये देखता है. अब ये चक्रा क्या करता है? आप फोन करते करते रोड क्रॉस कर रहे हो. You are looking on this side, and the car is coming from this side, and suddenly you come back, and the car just whizzes past. How does that happen? Because this is the one that gives you the warning. The moment before an accident happens, just when the accident, it's going to happen, is going to ask you to take. It's a fraction of a second. Action. Yeah, take action. It's a fraction. This chakra, the more you're aligned to this chakra, the more you're aware of your surroundings.
Now this one also gives you the camera to sit and stand. Okay, आप बात कर रहे हो तो कैसे दिख रहे होगे, and the moment you know that you are being jealous, एक तो आपको ना you have to understand these principles work on all of us. इसके बिना तो you can't be petty, you can't be jealous, you can't be greedy, you can't be skeptical, you can be a sponge and you can be foolish. कहते हैं ना, the people who succeed are the ones, otherwise there would be no inventions, there will be no, because if you're not foolish you won't invent, you will not learn, you will not be a sponge. Now जितने भी reasons हैं जहाँ से आप negativity लाते हो and you want to become, या मुझे negativity नहीं चाहिए, I might as well detach myself. Now this camera helps you do that. Why am I being angry? मैं सोची ऐसे क्यों रहा हूँ? This is not going to get me anywhere. An example yesterday, it just happened yesterday, so, and some friends will be looking at it because they were there. I had my alumni meet yesterday, 40 years of reunion in my college. Nice. And I'd taken on myself to manage the stage also. Well, I was thrusted on it. Sachin Sharma to karenge. So I was doing all that, running around since the morning, and I was like, nice. It was, my college was responding very well. They really made a lot of preparations. So I was very happy that, oh, okay, a lot of us are going to be meeting and things like that. And we also had to read out a list of people. About 10 people have already died in our batch. They know more. So it's like, wow, 10 of them is a lot. And then it's just, so we were like going through the entire structure and things like that. And people started coming in. And they had grade up. They were like, शक्लें बदल गई थी, you know, like बहुत सारे लोगों से हम 20 साल 25 साल बाद मिल रहे थे, तो ये कौन है, it was like that. And then through 3 or 4 hours, you realize how many of them have not changed since the time they were in college. They're not evolved. And I was not being judgmental, I was being intuitive about it. Observant. इंट्यूटिव, ऑब्जर्वेंट कर रहा हूँ. वो तो कपड़ों से, गाड़ी से, घर से लोग करते हैं, वो नहीं कर रहा था मैं सिर्फ हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से देख रहा था कि हाउ स्ट्रॉन्ग हैव दे बीन इनसाइड, हाउ दे इवॉल्व्ड, बिकॉज दे आर नाउ ग्रैंडफादर्स एंड their children are in the age of 20s and mid-20s and early 30s also, some of them. And some of them are doing very well. They came from all across. They came from the world. And I was watching body language. I was watching the way they were reacting, the way they were being conscious, not conscious. I was little disappointed to see that not more than 20% had really evolved as per the age. Now think about this. What troubles me? It's not this. They're friends or they were friends. And this is like an alumni. ये वो लोग हैं जिनको अपने बारे में सोचने का मौका मिला था. उनकी जिंदगी में सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ नहीं था, इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे. आज की जनरेशन 40 साल बाद सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल करेगी. उनको अगले 10 साल 12 साल सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. 20 साल, बिकॉज व्हेन टेक्नोलॉजी इज गोना टेक ओवर, रोबोटिक्स भी आ गया, जिनोम भी वो भी आ गया, बायोटेक्नोलॉजी भी आ गई. वो इतना कुछ से आ रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअली अंदर से स्ट्रांग नहीं हो तो कैसे करोगे? And humanity is facing that question. Nobody wants to answer that. So they give us some AI-driven tool as a friend. Virtual reality girlfriend, virtual reality guru, virtual reality this. It's not going to cut it. You need. So this is where my mission was कि यार एक काम जरूर हो सकता है कि अगर spiritually strong बना के इस देश को मिलियनेयर्स बना दिया जाए, पैसा होगा तो एक means बन जाता है. अच्छा, मेरे को सोने की चिड़िया वर्ड बड़ा पसंद आता है. Absolutely. And I was very disappointed in my growing years कि यार ये क्या चल रहा है, ये कैसा जो भी है. I don't want to make a comment on anyone, but only in the last 10-12 years मुझे लगा चलो या 15 साल जो भी है कि लगा अब there's a choice, there's an opportunity. So why don't I also jump in and do something at a society level? Using numerology, using my spiritual intuitiveness, using the scale of technology, using the platforms like a podcast, things like that, to empower the young. यार ये जनरेशन को empower कर देंगे ना, दुनिया में जितनी जनरेशन है इनके साथ, they will be hovering over them. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास ही तो है, यंग पॉपुलेशन भी हमारे पास है. Correct. इन पे अगर हम काम कर लें तो दुनिया को राज करेंगे, हम रहे ना रहे, kind of thing. So this keeps me going. It's a damn good, neat mission to have. I really love this, and that keeps me going.
on a daily basis and things like that. So these programs, these money magnet programs and stuff like that, I want to do more for. So I'm doing it in Bangalore only because there are a lot of software kids there, young guys, young blood, and all that. I want them to come in masses. Well, we do one experimental now and then we'll see how it goes. But the whole idea is to empower India. अब क्या पूछेगा हो तो क्या चलो पूछ No, see, that is fine. And okay, when you're talking about spiritual, let's go there for a little bit, because the strength and the backbone of the young population is going to be worthy in the workforce and create change only when their spiritual backbone is strong. That's something I'm coming at from your conversation. What are your programs, and people can sign up and things like that to help make that spiritual backbone strong? एक तो I have a website sachinssharmaglobal.com. SACHINNS Sharma Global.com. There are a lot of events there. All of my programs are all mentioned there, including business leaders mentorship programs are there, which is like one-on-one. The idea is that if I can empower a business leader, I can empower the whole company. I can empower their families. So that's a shortcut. Is like, one is the kids' way, one is to be a business consultant, which is, well, though I have experiences in working in some of the boardrooms in my life, but not that consultant, but a spiritual personal mentor. But वो जो रोल है ना, वो कभी खत्म नहीं होता. उसमें इस लड़की से शादी करूं कि ना करूं, और ये जो लोग वो तो आप मेंटरशिप में फिर वो आप पे डिपेंड हो गए. What डिपेंड नहीं होता, एम्पावर होता है. I'll tell you what. When you are talking to an individual who's running a corporation, CEO है, who's running a large business house, medium business house, small business house, they are highly and really nice. It's amazing to talk. They're very highly intelligently evolved humans. Yes. They've seen life and they've understood dynamics like nobody else does. वो dynamics understanding में आदमी फंस जाता है. इन लोगों को समझ आता है. So मेरे लिए वो है कि अगर मैं इनको spiritual strength दे के और predictive strength और दे दूं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ये वाइस प्रेसिडेंट आप हायर कर रहे हो, उसके नंबर्स आर नॉट कंड्यूसिव टू यू. दिस इज हिज, ये आपने ऑपरेशन हेड कर लिया, बट ही मे बी लीविंग इन द नेक्स्ट 3 years. You have hired an HR person right now, but she may have issues at her own family life at this point. 2-3 साल में family issues आ रहे हैं, उसकी लाइफ में आ रहे हैं. This is what I do for companies, large corporates. Confidential for chairmans. This is what I do for chairmans. Right. And the idea is to, and then there are chairmen who are very forthcoming to say, अच्छा फिर इनका life reading करवा के इनको ठीक कर दो, remedy कर दो. It's like that, it's like. So I have a very senior, business leader out of the Silicon Valley, who's also very well entrenched into the administration, and he's been in touch with me for the last 8-9 years now. I wasn't that senior at that time, and a lot of things going on in life. Today he is what he is. So that conversation always happens. So his wife keeps sending and keeps sponsoring life readings for friends and for political heads or politically active people out of that administration. And वो मिलते आते रहते, हर 2-3 हफ्ते में ना, या एक आ जाएगा कि इनका भी लाइफ रीडिंग करा दो, आई एम स्पॉन्सरिंग इट. तो इस नॉलेज की कोई अंत नहीं है, कहाँ पे जा सकता है. So I'm trying to assimilate it in that in forms of programs, which is basically now it's SSS Money Magnet 1 or Millions for Billions. Millions for Billions is like a 2-day thing. कि उसमें आपको फिर फ्रॉम द सोल लेवल जाके पैसे लेवल छोड़ने के बाद फिर आपको बिहेवियर भी होता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन अ बोर्ड रूम, एंड नो मैटर हाउ यू डोंट लाइक एंड यू really hate your job, how do you get ready on a daily basis and get back to work and be your full potential even if you hate your job. Now that kind of behavioral thing happens in Millions for Billions. So that's like a one night thing, and Money Magnet is about 4 hours straight on, just hit where it break the pattern, get the money. Is there a way some that people in general who are watching this podcast
can directly relate to what planets are giving them the challenge, that where they need to get the First is karmic debts. आप सबसे बड़ा तो karmic debts. If you have a 13, 14, 16, 19, they will four come. numbers 13, Yeah, 14, but they can 16, be anywhere. 19. Huh. They can be. anywhere. They can be in. No, let me tell you where all they can be. They can be in the first name. Okay. They can be in the vowels of the original name. Of the complete original name. Original name. School वाला जो नाम था. Right. They can be in the date of birth. Right. They can be in the date plus month plus year. Right. They can also be in the yearly numbers. It's just this particular year has come. Yeah, the time in the time cycles and all that, and maybe one more place. But 4 or 5 places these are hidden. These are hidden time bombs, waiting to explode at any time. And that is why you find that no life is a No. clean So life. let me reverse And on top of it, another number to throw in. Karmic debts are in 95% of you. that. बिल्कुल. Now see the average humanity, how successful they are forever. It's not there. ये 95% टाइम बॉम्ब्स कहीं कहीं छुपे हुए हैं और ये 95% पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं पे फटते हैं. अब किसी को 1 साल के लिए फट रहे हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम है जी, इसके ऊपर लीगल नोटिस आ गया. 13 नंबर का साल आया, इसके ऊपर लीगल नोटिस आ गया. या इसने जो इन्वेस्टमेंट करी थी प्लॉट्स की, वो फ्रॉड निकली. बट क्योंकि वो फ्रॉड नहीं पता चला था, 13 नंबर में पता चल गया उसको क्या तो फ्रॉड किया हुआ है. अब वो लड़ेगा. अब वो जब वो लड़ेगा, कोर्ट केस लड़े, जो भी करे, वो तो अच्छे टाइम में लड़ेगा बिकॉज वो तो 1 साल में ही आया. तो फिर अच्छा टाइम तो आपका सिर्फ यही साफ करते हुए निकल गया ना. अच्छे टाइम का पोटेंशियल तो नहीं कर पाए ना पूरा ठीक से, बिकॉज एक चीज जो शुरू आज होती है कल तो खत्म नहीं हो जाती ना. Right. इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर गुड ईयर्स ऑल्सो ना. हाँ. So when you are trying to establish that, see how critical it is for a person who has 1,000 crores invested or 100 crores invested or 50 crores invested in business to know these time bombs. Because उसके टाइम बॉम्ब गिरने का मतलब है पूरी की पूरी कंपनी बैठ जाएगी जहां पे hundreds of mouths are being fed. तो या तो मैं उस डायरेक्शन में जाऊं where I mentor the leaders and all that, या मैं फिर ऐसे प्रोग्राम्स करूं where I mentor the youngsters. So I'm doing both. So, what is the impact of a 14 or a 16 or a 19? See, 13 is money ka curse, where money would have been mishandled in the past life. 14 is about bad habits. Bad habits is all about addictions. Addictions, drugs, maybe. जिसको हम कहते हैं ना अयाश. हाँ. बुरी संगत. बुरी संगत. I mean, it's like consciously आपने adopt करी थी bad habits, and then hence you brought disturbance to your kith and kin. But you see, this might not be throughout your life. आपके पास अगर 14 है, उसकी एक टाइमिंग भी होगी कि कब वो ट्रिगर होगा, कि वो थ्रू लाइफ होगा. टाइमिंग ट्रिगर होना अलग बात होती है, इसका इफेक्ट कैन रिमेन द लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ इफ यू डोंट नो हाउ टू पे इट ऑफ. आप चलो पे इट ऑफ के बारे में छोड़ भी दो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि कार्मिक डेट है, आपको पता ही नहीं है. नहीं, अगर अब मेरी बात आपने एक मिनट एक सेकंड, आपने 14 के बारे में मेरे से पूछा था, वो रह गया था बीच में. यस. सो आई सेड दैट जो भी कर्म का दोष है, पैसे का 13, 14 इज बैड हैबिट्स, 16 इज रिलेशनशिप का, बैक स्टैबिंग इन रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट तोड़ा था. 19 इज डिक्टेटरशिप थी, किसी को आपने दबा के, हु नोज, यू मे हैव मर्डर्ड, हु नोज. वो डिक्टेटरशिप है, किस कल्चर में पैदा होते, कब पैदा हुए थे, ये पास्ट लाइफ के हैं. ये कार्मिक डेट्स तब बनते हैं जब आपका करा हुआ कर्म जो था ना, इट रियली डिस्टर्ब द पीपल अराउंड यू एट दैट टाइम एंड हेंस बॉट देयर बैड वाइब्स ऑन यू. मतलब कर्स आ गया. दीज कर्सेस हैव अ वे ऑफ फॉलोइंग टू द नेक्स्ट लाइफ. द वाव्स आल्सो हैव अ वे ऑफ फॉलोइंग टू द नेक्स्ट लाइफ. आपने वाव ले लिया कि मैं तो पैसे के लिए काम ही नहीं करता, मैं तो क्वालिटी के लिए काम करता हूं, पैसे की चिंता मत करो, पैसे की बात मत करो, पैसे तो आ जाएंगे. क्यों जी, लक्ष्मी जी के लिए आपको रिस्पेक्ट नहीं है क्या? पैसे क्यों आ जाएंगे? पैसे तो आने हैं, आप जो कर्म कर रहे हो उसके पैसे आने हैं. अदरवाइज यू हैव अ डिसरिस्पेक्ट फॉर लक्ष्मी. लक्ष्मी चली जाएंगे आपसे कि भाई इस घर में मेरे को रिस्पेक्ट नहीं है. आपके पैसे नहीं आएंगे, कोई ना कोई बहाने से जिंदगी भर ये होगा कि पूरी तरह पैसे नहीं आए वहां पर. एवरीथिंग इज स्पोकन वर्ड, थॉट एंड एक्शन. दे आर ऑल फ्रीक्वेंसीज जो आप यूनिवर्स को भेजते हो, जो आप बोलते हो. अभी भी जब हम बोल रहे हैं, जब there's an intention that this podcast will go and help people,
So you're creating a karma right now by saying all this, by thinking about it and then saying it, and then doing the karma of actually sitting, getting the shoots done. जो भी हमारे कर्म है वो एक साउंड बाइट्स की तरह जाके स्टोर हो जाते हैं. अब जो आपने स्टोर कर दिया उसमें से जो भी आप मंत्र की तरह बार बार बोलते रहोगे ना, पैसा आ जाएगा, आप काम तो कराओ, पैसा आ जाएगा, आप काम तो कराओ. जो भी आपने बार बार बोला वो आपके पैसे की लक खराब कर देगा. आपने अपने ऊपर मंत्र डाल दिया कि पैसा तो आ जाएगा. तो क्या बोलना चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर कि मैंने कर लिया, मेरे को प्लीज मेरा ड्यू है, मेरे पेमेंट्स कर दीजिए. दैट्स योर रिस्पेक्ट फॉर द गॉडेस ऑफ वेल्थ. एब्सोल्युटली. आप सिर्फ पैसा सबको चाहिए लेकिन पूजा तो आप दिवाली में करते हो सिर्फ. क्यों भाई? रोज क्यों नहीं करते? बाकी भगवान की तो रोज करते हो. ट्यूसडे को इनका करेंगे, संडे का इनका करेंगे, वेंसडे का करेंगे, तो लक्ष्मी जी का दिन क्यों नहीं? इफ यू रियली लव्ड मनी, क्योंकि कल्चरली आपको ये बताया गया कि पैसे पैसे के बारे में बात किया करो, वो ग्रीड है. मर्सिडीज की बात मत करो, पहले मेहनत करो, फिर कमाओ, फिर खरीदो. बड़ी बड़ी बातें मत करो, वो बहुत दूर है आपसे लक्ष्मी. आपको कल्चरली रिलेशनशिप खराब कर दिया पैसे का आपका. आपको पहले दिन नहीं बताएगा कि बेटा हर जगह जाके सेल में मत खड़े हो जाया करो, आप इतने पैसे से ये भी करोगे, पहले दिन से ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, और पैसा बढ़ाने के लिए आपको सब चीजें ट्रेनिंग करनी है. और जब पैसा बढ़ेगा, जिंदगी में अच्छा रहेगा, तो आपको दुनिया की हेल्प भी करनी है, जो दशम की सिस्टम होता था. तो क्यों नहीं बताते? क्यों बोलते हैं कि आपने 300 रुपए पुलिस वाले को दिए और निकल गए, वाह वाह, ताली बजाते हैं घर में. मतलब आपने पैसे से इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करी, उसका मनाया तो लक्ष्मी नहीं आएगी उस घर में. 300 रुपए क्या बचाए? आपके 30 लाख रुपए खराब हो जाएंगे बाद में. आप क्यों किसी गरीब से बोलते हो कम कर, कम कर, कम कर, और खुद जाके 2100 रुपए की टिकट खरीद लेते हो पीवीआर में, पॉपकॉर्न भी ले लेते हो 800 रुपए का उसके ऊपर से. पूरा रिलेशनशिप विद मनी is convoluted right now. And that's why most of the people are suffering on money front. You know, this is a big challenge today, and let's just expand on that for a little bit, because I think it can help a lot of people. Sure, it will. Because today, this is what I teach in my Money Magnet people's class. aspirations or the circumstances or the desires are such that to fulfill that, and given the structure of the economy and the society, you're always going. US is already beyond. India is also getting there. Credit card debt, EMIs, home loans. You want this, you don't have the chadar for it right now, doesn't matter. Overstretch yourself. आपको ये लोन दे देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, आप कर लो. And then this is where people are living with. There'll be a good segment of people who are living under financial stress because of that. But they're trying to work, trying to create value to bring that, let's say, payment to themselves. But somewhere that extra step is always a step away. I get there, but then it's a step away. I get there and it's a step away. How do you fix that kind of a relationship so that you're ahead and your expenses are behind, rather than you running after your expenses? Analyze where you are. Think through it. Give it some time. 1 month, 2 months, 3 months. Take your time to analyze every aspect of your life. Whatever then comes logically to you, reset your life. Set yourself a target of resetting your life. Well, I do it differently, but reset your life as a routine. कि यार मैं 2 महीने बाद तो एनालाइज करूंगा मैंने क्या अचीव किया. तो आपको हो सकता है 3 महीने लगे सिर्फ ये सेटअप करने में कि आप चाहते क्या हो. तो फिर उसके बाद 2 महीने या 3 महीने में आप यू विल गिव योरसेल्फ अ टारगेट कि चलो भाई आई हैव नाउ 90 days to change it. And then every day it's like, oh, now I got 79 days only left. I got 60 days only left. आपको वर्कआउट करना पड़ेगा एज अ प्रोसेस. आई हेल्प पीपल डू दैट. Obviously it's not as easy as I just said, but it's a part of the money magnet thing. I tell them how to go about doing things. But पहले आप एक्सेप्ट तो करो कि मिरर को देखो तो सही, शीशा तो आपके सामने ना, गलतियां तो आपने करी हुई है. Not because the police वाला was asking, not because anything. और रेड लाइट आपने क्रॉस करी थी, पुलिस वाले ने थोड़ा ना करी थी.
फ़ोन पे गाड़ी चलाते चलाते आप फ़ोन पे बात करते हैं, पुलिस वाला थोड़ा ना कराता है। आप 300 रुपये बचा के निकल गए, उसकी ताली बजा रहे हो, लेकिन जो 1000 रुपये आपने बचा लिए, आपने लक्ष्मी जी का निरादर तो किया उस टाइम। करो, आपके पैसे नहीं आएंगे, रुके रहेंगे, और रुके रहेंगे, लाखों में रुके रहेंगे। आपको पता ही नहीं है आप क्या क्रिएट कर रहे हो। What is the first step? Integrity. If I am asking something for money, for my services, I am very clear कि अभी मैं 100 रुपये का वर्थ है मेरा, मैं अभी सिर्फ 70 रुपये या 50 रुपये ले रहा हूँ। I will increase my worth, for which I keep doing something, keep adding something. On the other side, who can't afford anything, I got something at 50 rupees also in my website, and for free also there. 2000 Instagram reels now, all for free. Right. भरी हुई रेमेडी उसमें, 2000 रेमेडी. So there is always going to be something for the masses, so that knowledge reaches home. And there's always something that is going to make my life, my aspirations also meet, where I think I'm underpriced whenever I am, and when I'm not underpriced, I'm not underpriced. But at no point in time have I ever felt so far that I've overpriced myself. Never. I'm very clear about the fact that I'm underpriced. So universe keeps listening, is not happy. चलो उसको और खुश कर देते. नहीं अभी भी खुश नहीं है, चलो और खुश कर देते. या नहीं करते तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो भी अच्छा है. I'm number 9, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. अपने आप आ जाता है, अपने आप चला जाता है. It's like that. So you have to live that. तो उसके लिए टाइम तो चाहिए सोचने के लिए आपको. वो टाइम 2-3 महीने में सोचने में आता है, अब एक दिन में सोचने में नहीं आता. अब इस पॉडकास्ट को भी अगर आप 10 बार इंसान देखेगा ना, तो उसकी हर बार उसको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इसके अंदर. वो आप मनी मैग्नेट में आप बैठ चुके हो, या एक प्रोग्राम में बैठे थे, अग्रणी मैन. आप उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को भी देखोगे ना, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा. मैं 37, मेरा भी 37th बैच अभी जो मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ प्रोफेशनल बैचेस में. एंड ओल्ड स्टूडेंट्स कम से हम जब आते हैं करने के लिए, आपको वही सब्जेक्ट वही टॉपिक कवर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ और मिल रहा होता है. There is something that you do which is angel invocation. That's for angelic world, that's for quick help. अब जैसे हमारे देव देवी है ना, एंड फरिश्ते हैं जैसे मुस्लिम्स में, क्रिश्चियनिटी में एंजल्स हैं. और रेलम तो वही है ना, इंद्रलोक वाला जो रेलम होता है, हम उसको इंद्रलोक कहते हैं, देवलोक कहते हैं. I mean, could it be that someone in a village in India is praying to a certain Devi, and that is someone in a small town in US is praying to a certain angel, but the consciousness behind it is the same, they're just calling सेम different स्ट्रैटा, names. वो स्ट्रैटा ही सेम है. हाँ. जो देवलोक हम कहते हैं, इंद्रलोक कहते हैं, वो ही सेम है. It's just 3 different names from 3 different religions. But Dev Devi, Kul Devi, Yes. Gram Devi, Stan Devi, Vastu Devi, there are many Dev Devis. yeah, हम कहते हैं यार हिंदुस्तान, हम कहते हैं 1 करोड़ देवी देता है. एंजल्स भी बहुत सारे, लेकिन 4 मेन एंजल्स होते हैं विच आर मेंट फॉर एवरी ह्यूमन. तो 8 तो बिलियन ह्यूमंस ही हैं. तो 8 बिलियन into 4 कर लो. तो पॉइंट इज के वो अंडरस्टूड नहीं है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो एक पताल लोक होता है, एक आकाश लोक होता है ना, तो ऐसे तो वो सारे के सारे वो लोक एक ही है. These are the soldiers, or they are the healers sent by the God to help us manifest our life. अब अपनी लाइफ की मैनिफेस्टेशन में क्वालिटी तो लानी पड़ेगी ना, आप ही को लानी पड़ेगी ना. नहीं, for example, Christianity just came about 2000 years ago, and Sanatan has been there for over. And why would you say that something which is 2000 years old is not as good as Sanatan, which is 100,000 years old? Everything, if Christianity would have come, it also would have come from some kind of expectations from God, na? Or the life that they are living No, in. so my question is, were those angels discovered, or they were created when Christianity was created? How do I know? That's not for me to answer. See, who got converted into Christianity were different religions, right? Before that, Christianity came by converting a part of Europe into Christianity. So they were a different religion before. So you think the Judah religion or the Jewish religion was less, anything less than the Christianity or the Hindus? No, it's just a thought. It's just a thought. How can you know, it's us as humans question God.
No, see, there is a connection that you clearly see within Japan, for example, or even Indonesia. In the Shinto, there is a goddess they pray to, which is akin to Lakshmi Devi. So we can relate with them. There is the same consciousness. Not that only they in are praying not to. only in Japan, even in China. That was just an example. मनी का गॉड हर रिलीजन में है. Even in Christianity, it is called abundantia. There's an angel called abundantia. And even in China, Chinese this thing, there's a money god. The force of money was always recognized, चाहे वो barter होता था या वो trade होता था या पैसा देते थे. The force of money was always recognized as the means to achieve daily needs to spiritual needs. It is always there. आज आप कर्म के दोष पूरे करते हो, पूजाएं कराते हो तो पैसा अलाउड है. कलयुग में लक्ष्मी जी है ना, वो आप पैसा दे के पुजारी को अगर पूजा करा के निवारण कराते हो तो पैसा अलाउड है, क्योंकि पैसा इटसेल्फ एक फोर्स है और वो फोर्स है, इसलिए उसकी एक गॉड या गॉडेस है हर रिलीजन में. इट्स द सेम थिंग. मैं आपको क्या कह रहा हूं, आई एम सेइंग ओवर सिंप्लीफाई लाइफ टू से मैं जितना अंदर जाऊंगा, भगवान तो यहां बैठा है ना, रिलीजन से क्या करना है मुझे. रिलीजन तो नॉलेज देता है मुझे, एंड दैट इज व्हाई ऑल रिलीजन्स आर इंपॉर्टेंट. ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक रिलीजन बिल्कुल ही खराब है, उसके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं थी जो सालों से, चाहे वो 20,000 साल से हो, चाहे 1,00,000 साल से हो सकता है ऐसे कोई रिलीजन में 1,000 साल से चल रहा है, उसके अंदर कोई नॉलेज वर्थ नहीं है लोग. ये तो फिर आंखें बंद करने वाली बात है. तो फिर ऊपर वाला थप्पड़ मार तो रहा है आपको, सारी दुनिया तो वॉर पे है. कहां तक अपना झंडा फहराओगे? अगर आपका झंडा किसी झंडे को तोड़ के फहराया जाता है, जैसे जो करते हैं some martial religions are trying to do it, they will face the consequences. सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं जोन्स में है आज भी, जहां वो किसी और का झंडा नीचे करके अपना झंडा ऊपर करने की कोशिश करते हैं. सारी प्रॉब्लम्स वो कंट्रीज फेस कर रही है, एंड इट इज गोइंग ऑल अक्रॉस यूरोप. Yes. सेम इंटेंशन, सेम थॉट. आपको ऊपर वाला इतनी मार मारेगा आपको समझ भी नहीं आएगा. रियलिटी वॉज वॉट, मेरा शीशे से देख के मुझे पता है मैं कितना सच हूं कितना गलत. अंदर मुझे पता है भगवान क्या दे रहा है. अंदर से शांति है तो भगवान के साथ हूं, अंदर से शांति नहीं है तो भगवान के साथ नहीं हूं. दैट्स कॉल्ड EGS, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम. या मेरा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम मुझे कहता है मैं तो कंफर्टेबल हूं तो मैं गॉड के साथ हूं, विच मीन्स द यूनिवर्स आई एम अलाइन्ड टू इट. आप इतना करने के लिए टाइम निकालो ना, बाद में बड़ी बातें तो बाद में करेंगे. अपने डेली रूटीन में शीशा देखना तो शुरू करो. Someone doesn't know the numbers, but now after watching this podcast, let's say they're facing a karmic debt situation. Very important, yeah. ठीक है? They're in the situation. Now they recognize, oh, this is an addiction situation. मैंने यहाँ सुना है कि 14 मेरे को दिख गया है मेरे DOB टोटल में या जहाँ भी है. तो अब मेरे को ये समझ आ गई कि ये हो रहा है and I'm falling into it. अब बाहर कैसे निकलना है? That is, you have to get a chart made and proper guidance चाहिए होती है उसके लिए. There are no quick fixes to karmic debts. Well, you Are there remedies for it? I teach them to my students also now. And that's why we have over 1,000 plus students have been certified, and they're helping people to remove their karmic debts. All the way. And are karmic debts removed by karam only? Mostly yes, but no. There are other ways also. Or an evolution, like you said, कि मैं अपने alumni meet में गया, a lot of people were still where they were in terms of evolution. They did not evolve. But are karmic debts in a way telling you कि इस challenge से आपको ऐसे internally, psychologically evolve करना है into another level of a being. That's how you cross it. See, the point is that there is no bigger power than the knowledge. लाइफ में नॉलेज होगी, पता तो चले कि कार्मिक डेट्स का मतलब क्या. टुडे यू डूइंग दैट सर्विस टू ह्यूमैनिटी बाय टेकिंग दिस पॉडकास्ट आउट टू पीपल एट लार्ज. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स a lot of remedies come from just sheer knowledge of it. कि यार 14 का मतलब है यू आर आउट ऑफ बैलेंस. कोई ऐसा चेक कर लो, कोई आउट ऑफ बैलेंस तो नहीं चल रहा, कोई
हैबिट तो ऐसे नहीं है आपकी अभी भी, एंड थिंग्स लाइक दैट टुवर्ड्स द मनी इंटेग्रिटी हो गया, जैसे तेरा नंबर है, या रिलेशनशिप का इंटेग्रिटी। इतना तो पता है कि आपकी एसेंस ऑफ लाइफ तो ये आई गई ना, कि आप पैसे के बारे में इंटेग्रिटी देख सीखने आए हो, या रिलेशनशिप के बारे में सीखने आए हो, या हेल्थ। तो जब आपको फंडामेंटल पता चल गया, अब रेमेडी की बात बाद में करेंगे। यू कैन लिव योर लाइफ राइट अवे बाय जस्ट नोइंग दिस। करेक्ट। उतना ही काफी है ना टू स्टार्ट द जर्नी। बिकॉज उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है, सी एक टाइम आपको आएगा ही आएगा वेयर यू विल बी इंट्यूटिवली एंडाउड टू अंडरस्टैंड कि यार शायद ये ठीक रहेगा मेरे लिए, एंड यू मे नॉट नीड एनी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर। यू विल हैव दैट ऑप्शन, विल ऑलवेज बी देयर, दैट नोइंग द फ्यूचर इज द बिगेस्ट रेमेडी। तो नोइंग द फ्यूचर इज चार्ट ना। अगर वो चार्ट नहीं आता तो उससे पहले तो आपको ये तो पता है कि यार आपको बैलेंस करना है, 14 है 13 है बार, तो वो भी प्रीकर्सर है। कहीं से तो स्टार्टअप तो होगा, पहले रिकग्निशन तो आ जाता है आज के थ्रू कि हाँ भी मेरे अंदर कार्मिक डेट है। आपको तो पता नहीं कि नाम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपके अंदर नाम के अंदर कार्मिक डेट है कि नहीं? आप तो डेट ऑफ बर्थ से ही करोगे, ज्यादा से ज्यादा डेट मंथ ईयर ऐड करके भी चेक कर लोगे। सो समवेयर my reels help sometimes, programs help. Website पे there are many options to understand karmic debts. There is a very big podcast I did about karmic debts only with Speaking Tree, and that got about 300,000 views, and I think it's still growing. So if you can log on to Speaking Tree, Yeah, we know that. there's a karmic debt there. Karmic debt, this thing with me. Yeah. So that kind of explains it in details. तो वहां से ही फर्क पड़ जाएगा, because वहां पे मैंने रेमेडीज बोला हुआ है। Let me give you a real life example. I know a few 19 people. We are going to end this after this. We're going to end it in 3 to 4 minutes. Yeah. I know a few 19 people. The karmic debt of 19 is domination, control, taking control of the next person, or dictatorship, like you said. So, and I see those qualities even in the current life, in that person. Ab, chances are they may not recognize it, and they'll have to again rebirth, still continue to pay off that karmic debt. And what is the best way for a 19% to come out of it? Because I think that's one of the toughest Charity. to come out जब of. किसी और के दुख को अपना दुख, जब किसी और के दुख में हाथ डालते, पैसे नहीं सिर्फ, तो अपना दुख बड़ा कम दिखता है। Similarly, the more you see the stress in other people's life, the more you realize how lucky you are. The expression of gratitude. It'll come automatically. It'll come by experience. You got to get them to experience that. You got to get them to experience a spiritual journey. Maybe the family does go to a charity. The family does go to an old temple, old place of worship. चाहे mosque है, church है, old place where the vibrations has been there for centuries. It'll open up something for them there. That kind of you have to find those little space of peace, internalizing this peace. चाहे वो बीच में जाके बैठा है, उसके बाद चाहे वो पुराने वर्शिप जगह बैठ रहा है, चाहे वो हाथ से लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को क्या कर रहा है, वो प्लांट्स भी कर सकता है, पेट्स भी कर सकता है, क्लाइमेट भी कर सकता है। कहीं ना कहीं जहाँ पे किसी और का दुख दिखेगा तो समझ आएगा आप कितने लकी हो, एंड दैट स्टेज फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो अगर आप बोलो कि टॉकिंग अबाउट द मनी वाला पार्ट ना, कि भाई आप पैसे को लेवरेज करते हो, घंटों को लेवरेज करते हो, कुछ पैसा बनाते हो लाइफ में, कुछ क्रिएट करते हो, कुछ चीज़ों को दिखाते हो, देखिए जी इतना बढ़िया घर है हमारा, इतनी बढ़िया गाड़ी है, हमारा सेलफोन का मॉडल है, एंड यू फील सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दैट, बट आप ये भूल जाते हो कि कोई आदमी खाना भी नहीं खा पा रहा। और बहुत कन्वीनियंटली हम यूक्रेन वॉर की जैसे बात करते हैं, दैट्स अनफॉर्चुनेट फॉर श्योर, बट हम बहुत कन्वीनियंटली गाजा की पिक्चर्स नहीं देखते। जहाँ छोटी सी लड़की होगी 8 साल की, हाथ में खाली पतीला बैठ के वो रो रही है, उसको कोई खाना दे दे और वो मर जाती है अगले दिन, और ये रोज हो रहा है और हम बात नहीं करते। हाउ मच ऑफ योर कॉन्शियस इज डेड? बंद पड़ी है। 99% ह्यूमैनिटी इज स्ट्रगलिंग। जाओ गाजा में, क्यों नहीं करते आप? अगर आप बोलते पिटिशन डालते, ठीक है वॉर करे, जो मर्जी कर रहे हो, बट यू कांट स्टॉप फूड ऑफ अ चाइल्ड टू गेट इनटू द कंट्री। यू कांट डू दैट। वो मर रहा है वो बच्चा, जाके पिक्चर देखो सर, आपको नींद नहीं आएगी रात को। सो मनी क्या है, 2 सेकंड में आप 19 को वहीं भेज दो, वो जिंदगी भर के लिए उसका निकल जाएगा सारा डोमिनेशन।
जहाँ आप कंफर्ट लेवल से जोन से बाहर निकलोगे तो बात होगी ना। वरना आप स्ट्रगल करते हो। 90 नंबर हार्ट अटैक डायबिटीज देता है, डायबिटीज बुढ़ापे में अंधापन देता है, ब्लाइंडनेस देता है। जिंदगी में स्ट्रगल करते रहोगे यार, इससे तो पहले क्या रेमेडी कर लो। Which is the intent. The whole intent is exactly. I agree with you. So there we go. So I think we should continue this another day. Absolutely, and very quickly, because one point is not touched upon and you can touch upon it. Planets you've spoken about, and I just want to very quickly talk about elements: earth, fire, water, space, air. That each planet is element dominant. In your numerology, the elemental aspect, does that also come into play? Not in with my numbers? calculations. No. Yeah, with numbers. 1 is fire, 9 has No, I fire. hear that. I know that what's the sun and what's the moon and what's the energy of Venus will. But in the calculations of my numerology numbers, they don't. Okay. Now, how does it get compensated? The idea is that you can't mix in, fire with water, if you were saying like that. For example. For example. So but that's untrue. 1 is absolutely in harmony with 2, 4 and 7. So that's what I'm saying. Numerology will not work with the elements. It won't work with the elements. So अगर आप बोलो कि मैंने राहु को राहु बोला, यूरेनस नहीं बोला, यूरेनस अलग चीज होगी उस चीज में, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे, because 1, 2, 4, 7 are harmony planets and proven beyond 40 years I've been practicing this. We don't use the elements. There are 26 aspects of a chart. So chart बनता है, 26 combination of planets come to the fore. Some are for the future, some are for the past, some are for the what's happening in the present, some are for just the frequencies completely going haywire. But you study all of them, you bring those little pieces of chess together to make a picture, and that's where it stops. But in a this conversation, मैं elements को use नहीं करता. Do the elements relate with planets when you're using planets? No, that's exactly what I'm saying. In terms of helping the person. No, I understand like I said, I understand moon energy. I understand Venus की energy will hit you in your mind. मान लो मून को आप बढ़ाना चाहते हो किसी में, आप उसको बोलो पानी और पी लो. नहीं, पानी और पीने को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं उसको लैब्रोडोराइट कैटसप बनाऊंगा, बिकॉज पानी पीने से नहीं होगा. It will not work like that, because पानी तो सभी को पीना है. Right. It's like you keep yourself hydrated. But मैं मून को कभी भी बढ़ाऊंगा नहीं. मून एक ऐसी एनर्जी को बढ़ाई नहीं जाती. So in your question itself lies the answer. Okay, no, you picked up the wrong planet जिसको मुझे बढ़ाना चाहिए, मून को नहीं बढ़ाया जाता. अच्छा हुआ उठा लिया ताकि लोगों को पता तो लगे. But चलो पता तो जब एक बार there will be many, we'll have many conversations I'm sure going forward also, but I think for the day today it's more important to understand that where we stand today, we as humanity need to take a stock. And it doesn't help us at all to be a part of a thing. Everybody thinks the same, so I should also do the same. It helps you a lot to be an individual and try to get very, very strong spiritually first. उसके लिए हमारे पास कोई shortcut बचा नहीं है अब. Trust me, in 10 years you will know that the children who are growing today, they're going to have a problem. 10-12 साल में वो out of depth हो जाएंगे, and they'll be in crores, they'll not even in lakhs. 140 करोड़ का देश है. They'll be in crores. It'll become a big problem. So if you don't, so let's see God's hand. Let's see how it comes through. Should they in general try and connect with either their Kuldevi, Kuldevta, Ishtdev, and just to make them understand about the Kuldevi and Ishtdevi Devta may not be the right thing for a child or that age group to even get into their language. So how do they get strong spiritually? Just by believing in the power. They'll have. That koi hai. आपको देखेंगे ना, फिर किसी पंडित जी को जाके देखेंगे, किसी पिक्चर को जाके देखेंगे. अभी आपने जैसे वो मूवी आई है, something that I think anybody and everybody in India should watch. And I don't endorse movies on a podcast, but yeah, Mahavatar Narsimha. It's an animated film, and I had never seen that, and I was like, a little skeptical when I heard that, in small towns, everyone is like Aarti ki thali leke in the movie hall. And I had an 8-year-old with me, and from a Saint Xavier school. And I was just watching her for a while. She was like, and then me as a solid thinking person, is what I think I am. I was like, with my mouth open.
for a part of the movie itself. It says, what have they created? It is so powerful. You want to understand Sanatan, you want to understand that power, just see this movie. Absolutely. And I think it's a trend that's starting. It's a trend that's Yes. touching millions. But I think there are some movies that come, movies or incidents. A Pahalgam incident will always be etched in our mind, and Operation Sindoor will always be there. There are always going to be some incidents like the 9/11. This kind of a movie deserves that kind of a recognition. It's like that. It's not funny. And movie is like, you got to sit through this. And if it was at a cinema hall, there's no better way of doing it. So, चलो मैंने मूवी के बारे में बात कर लिया पॉडकास्ट वो भी हो गया. चलो. But it was like I said, oh, ये मूवी है जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है. हाँ. That's what I walked out like a little zombie myself. हाँ. For a little while, then my logic sense took over, which is a very strong sense. But I was like, यही तो चाहिए. He was like that. So let's see. More conversations later. Yes, thank you. Thank you. We've had a lovely, lovely conversation with, I think, many in-depth nuances over a variety of topics. And there are plenty of more things to discuss. Surely. Yeah, of course. Life's not like just the beginning. Yeah. Pleasure. Thank you so much. Thank you. Take Thank you care. for having us Thank you. here. God bless.